क्रिसमस ट्री बनाने के लिए हमें चाहिए ग्रीन पेपर और इन ग्रीन पेपर को सबसे पहले फिर रोल करना है। इसकी ऐसे कोन बनानी है। अब इसे ऐसे पेस्ट कर लिया। अब हम इसे कट करेंगे। ऐसे कट करना है। ये ऐसे कोन बन गई। दूसरा पेपर लेना है जिसके ऐसे हम फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करना है पहले। ऐसे फिर ऐसे फोल्ड करने के बाद फिर इधर से ऐसे काटना है। अब इसे इस साइड से काटना है और इस साइड से। अब इसे ऐसे ऐसे ही सारे काटने हैं। अब इसे ऐसे कट करने के बाद ऐसे राउंड करना है। अब इन सबको ग्लू से ऐसे पेस्ट करना है। ऐसे ही करते करते हमें सारे लगाने हैं। अब इसे डेकोरेट करने के लिए हमें थर्माकोल का स्क्वायर और पैकिंग पेपर की चाहिए और इसे टेप से या फिर ग्लू से ऐसे पेस्ट करना है। अब इसे ऐसे यहाँ से ऐसे रोल कर लिया जिससे ये चॉकलेट जैसा बन गया और फिर इसे पेस्ट कर दो। तो डेकोरेशन के लिए हमने गिफ्ट्स बना ली है और ये देखो एक छोटी सी टॉफ़ी और ये देखो ग्लिटर पेपर से हमने एक बॉक्स बनाया और इन पे हमने वूल से ये ऐसे डिज़ाइन कर दिए। अब ये थर्माकोल बॉल्स इस पे डेकोरेट कर देंगे। अब हमें ऐसी लेस लेनी है और इसको हमें डेकोरेट करना है। ये देखो हमने डेकोरेशन कर लिया है और ये देखो ये एक गिफ्ट बॉक्स है जो हम इसे बनाना आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। बनाएंगे स्नोमैन। उसके लिए हमें चाहिए न्यूज़पेपर। अब इसे हमें न्यूज़पेपर बॉल बनानी है। अब इसको ऐसे टेप से चिपकाना है। ऐसे ही एक और बॉल बना लेनी है और वो उससे छोटी बनेगी।
बॉल को इसके एक साथ चिपकाना है। अब ग्लू लेनी है और इस पे पूरे चारों तरफ लगा देनी है। अब इसे पानी के साथ पूरा फैला लेना है। अब इस पे टिश्यू पेपर ऐसे पेस्ट कर देना है। अब इस पे कॉटन लगानी है। ये देखो, ये हमने पूरी कॉटन लगा दी है इस पे। अब आप सोच रहे होगी ये क्या है। अभी तो इसके यहाँ पर इसकी आईज बनेगी, फिर इसकी नोज बनेगी, और इसका मुंह, और यहाँ पर इसका मफलर बनेगा। कि आँख नाक मुँह बनाने के लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए। अब ब्लैक पेपर से हमें ऐसा रोल बना लेना है। अब एक सर्कल लेना है और उसको ऐसे पेस्ट कर देना है। अब इसकी साइज से थोड़ा बड़ा सर्कल लेना है और इसको फिर इस पे पेस्ट करना है। अब इसको इसकी कैप बना के इस पे पेस्ट कर देना है। बनाएंगे इसका मफलर, और मफलर बनाने के लिए हमें चाहिए ग्लिटर शीट। शीट से हमें ऐसे कट कर लेना है और स्नोमैन के पेस्ट कर देना है। अब इसे पेस्ट करने के बाद हमें ये वाले पेस्ट करने हैं। टूथपिक या फिर कोई भी स्टिक लेनी है और इसके ऐसे पेस्ट कर देनी है। ऐसे ही मैंने दूसरी भी पेस्ट कर दी है और ये हमारा स्नोमैन रेडी है।